Bismillahirrahmanirrahim. Hoy día cocinamos y dentro de dos lenguajes, primero español, después en urdu. Hoy día estoy cocinando de pimienta verde con papa. Pimienta verde, papa, tomate, un cebolla, ají, picante. Tiene condimención, tiene jengibre, tiene cilantro, pepas molido, peruano ají, comino molido, tiene curry, tiene pimienta negra, tiene cilantro cortado, tiene comino molida, tiene paste, tiene jengibre con ajo, molido con licuado, tiene yogur. आज हम शिमला मिर्च और आलू बनाएंगे। उसके अंदर ये चीज़ें हम डालेंगे: टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक कटा हुआ, धनिया पाउडर फॉर्म में, और मिर्च, हल्दी, ज़ीरा कुटा हुआ, ये मिर्च, सब्ज़ धनिया और कुटा हुआ गरम मसाला, लहसुन और अदरक का पेस्ट और दही। Ponemos ahorita cebolla. Ponemos ajo, otro más jengibre, cual molido. También ponemos ají verde, o se quiere poner, o se no quiere poner, no problema. Ponemos ahorita tomate. Cuando tomate अब हम इसके अंदर हमने अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डाला और सब्ज़ मिर्ची डाली और टमाटर डाले। अब हमने इस टमाटर के बाद आलू डाले, पापा। अब हमने इसके अंदर जो बीज था वो डाला, जो सब्ज़ मिर्च का था, शिमला मिर्च का। Uniste de pimienta de semillas, cual verde y dentro, poniste de sal। अब इसके अंदर हमने नमक भी डाला। Ahorita fritamos bien que suave de papa, también pimienta verde, semillas también suave। अब इसके अंदर आलू और जो शिमला मिर्च का हमने बीज डाला उसको अच्छे तरीके से भून लें ताकि वो नरम हो जाए। हमने हल्का सा पानी डाला और उसी के साथ ही जो मिसाले हमने दिखाए थे वो डाल देंगे। Vamos, ahorita ponemos poquito agua, también cuál antes miraste condimento, ponemos। हमने शिमला मिर्च डाल दी और इसके अंदर पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया हमने। Ahorita poniste de pimienta verde, porque no ponemos agua, nada, solo directamente ponemos pimienta verde। 2-3 मिनट के बाद हमने इसके अंदर 2-3 चम्मच दही के डाले। Después de 2-3 minutos ponemos 2-3 cucharadas de yogur natural। अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया और बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना, ऊपर दम वाली आंच पे हमने ऊपर ढक्कन दे दिया। Puede mixtamos con todo।